सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं दे आर नॉट कॉन्टीन्यूस एक्सपेरिमेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें तो महीनों के महीनों हम उसको कंटिन्यू रखें। लेकिन एक चीज़ को सामने रखिएगा कि सेल कल्चर या प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स जो हैं दे नीड टू बी मेंटेन्ड और दे नीड टू बी स्टोर्ड। अदरवाइज every time when you need to perform this experiment you may need to have the cells purchased from the source again. So it is possible that when the cells are not required for further culturing, we can store them, we can freeze them unless until we need them again. इस पर्पस के लिए हमारे पास कुछ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं जिनकी जो है वो मौजूदगी में सेल्स को डैमेज नहीं होता। नॉर्मली तो आप ये भी सोच सकते हैं सेल्स को कल्चर मीडियम में ही हम फ्रीज कर दें, बट दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इन दैट सिचुएशन सेल्स आर गोइंग टू बी डैमेज्ड। हियर वी एड इफ सम क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स जैसा कि DMSO है। DMSO की मौजूदगी में सेल्स will not be damaged because DMSO की एक property है that it reduces the freezing point and it allows the slow cooling process. So जब भी हमें freezing की तरफ जाना है we need to use some cryoprotective agents for cell freezing. अब gradual freezing और quick freezing में क्या होता है that if there are some ice crystal formed during the cell freezing, those ice crystal can destroy the cells because cell में आपको जो information है cell के हवाले से outer cell membrane is present, anything can cut that cell membrane and these ice crystals are as sharp as any blade. The materials required for cell freezing a cell culture which is at its log phase so that we can have maximum number of cells available in the required volume, and then we may have efficient cells which are having the potential of division. Then we need complete medium supplemented with FBS, that means the serum, and DMSO, that is the cryopreserving agent. Then we need the benchtop centrifuge machine for the process of centrifugation. अब चूँकि हम बात कर रहे हैं मोनो लेयर सेल कल्चर की, वी नीड टू ट्रिप्सिनाइज द सेल्स, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हाउ द ट्रिप्सिनाइजेशन कैन बी डन. वंस वी ट्रिप्सिनाइज द सेल्स एट लॉग फेज वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन. वंस द सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कल्चर फ्लास्क और कल्चर प्लेट, these are centrifuged in a 2 milliliter tube in the presence of medium, serum containing medium. All the medium is removed in the form of supernatant which is obtained after centrifugation. Cells settle down as pellet. The medium remains behind as the supernatant. The supernatant is removed. And then we add the freezing medium. Freezing medium contains the DMSO. We add 1 milliliter of 4 degrees centigrade colder freezing medium, resuspend the pellet so that all the cells are suspended in the 1 milliliter volume, and then we make up the volume up to 5 milliliter. अब इस stage के ऊपर we need to know how many cells are present per milliliter. For that purpose we need to go for cell counting using hemocytometer, trypan blue assay, or we can do it using any automatic cell counter. जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वी स्टोर द सेल्स 1 to 10 million per milliliter. सेल काउंटिंग के बाद वी विल गेट टू नो हाउ मेनी सेल्स इन टोटल आर फाउंड इन 5 milliliter, so we can add more medium to get the number of cells 1 to 10 million per milliliter. Once it is done, then we aliquot these freezing cell cultures in a volume of 1 milliliter, and those 1 milliliter tubes are stored at -70 degrees centigrade. -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको स्टोर किया जाता है 24 आवर्स के लिए. उसके बाद सेल्स को हम
फ्रीजिंग के लिए शिफ्ट कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र में या लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में।